So namaskar all of you. Answer writing batch Hindu law section को हमें first session टा देखते लो आज second session टा तो किचड़ा next sections रो question discuss करिबा Hindu Marriage Act रो ता आगुरु जो माने ई थर को ओडिशा जुडिशियल सर्विस दउचंती तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तमक चली छी एबेटु हमें मेंस रो क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दउछु जो माने को टिके आंसर लिखिबारे प्रॉब्लम्स अछि ओके मु डिफरेंशिएट कर दउची जो माने एई वर्ष दउचंती सेही माने ही कोर्स ता जॉइन करंतु क्रैश कोर्स ता जो माने आउ टाइम अछि दबा पे आंसर राइटिंग बेस्ट ता जॉइन करंतु ओके काहे ना क्रैश कोर्स ता टिके बेसी इंटेंसिव हबो त जो माने एई वर्ष ही परीक्षा देबे सेति की प्रेशर से माने ही नेले लाभ अछि अदरवाइज एवरीडे जो माने खाली आंसर राइटिंग करिया पे चाहउचंती 2 वर्ष 3 वर्ष परे परीक्षा देबे आपण माने मेंटरशिप किंबा आंसर राइटिंग बैच रे जॉइन करि गेले जोतरे की प्रीलिम्स और मेंस पे आपनकर मेंटरशिप रहउची ओके सो लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर कोर्स एटा लाइव क्लासेस स्टार्ट होबो आपनकर आफ्टर द प्रीलिम्स जुलाई रे जतरे प्रीलिम्स सरीबो सेते बेले हमें लाइव क्लास स्टार्ट करिवो मेंस रो किंतु एबेटू आपनकर अदर एस्पेक्ट्स गुडा आपण कंप्लीट कर दे पारे जेमति कि कोर्स रे कोन अछि कोर्स फी ता 7000 रहउची 10% स्कॉलरशिप मिलुची वंदे मातरम स्कॉलरशिप तो आपण को 6300 टका बाकी आसीबो सेटा जेतेबेले आपण परचेस करछन तळे देखिबे गोटे अछि वंदे मातरम कूपन सेटा क्लिक करले आपण स्कॉलरशिप एप्लीकेबल हे जिवो एथरे हमर सब पेपर्स रो कवर होची तार इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सब तार डिस्कशन करिका इंग्लिश भी कवर होची ओके तापरे प्रोसीजरल लॉ कवर होची आपनकर तीनटा लॉ जहा आपण नै चंती थ्रू बैचेस करिका जो पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उडा पांचटा जक ऑप्शनल हमें प्रोवाइड करथि तेनु आपण जो भी ऑप्शनल नै तांतु सब गुडा एथरे कवर हो सबटू इंपोर्टेंट पार्ट ए कोर्स रहला सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2012 टू 2023 एटा बहुत इंपोर्टेंट आपण देखिए बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए और जेहेतु गोटे सेट रे 12टा क्वेश्चन थाए हमको मात्र 6टा क्वेश्चन करिया पड़े हमर एटा 12टा जगह क्वेश्चन सॉल्व की अछि तो ता बाहर ऊपर क्वेश्चन आसीबा टिके डिफिकल्ट हां को क्वेश्चन आसे एनालिटिकल क्वेश्चन आसे प्रॉब्लम क्वेश्चन आसे ओके तेनु ता पई हमें सेपरेट सेक्शन रखिजु फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस ओके को वर्ष रे गोटे को पेपर रे पड़ी जाउची एनालिटिकल क्वेश्चन तो पिला बहुत हैरान हो जाउची नहीं अपन प्रैक्टिस करी गेले से हिसाब रे आराम रे सेटा करते रे तापरे आउ गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट आरो रहउची कोन ना टॉपर्स को आंसर कॉपीज करिका से गुडा रहउची जेंति कि लास्ट ईयर जे एमन जो माने मेंस रो क्रैश कोर्स बैच नै थिले से माने आंसर्स केमति लिखि थिले कोन रैंक मिलता ताको तो से गुडा सब आपण सेठी पाई परिबे तेनु किए जॉइन करंतु जो माने पूरा श्योर अछंती प्रीलिम्स पई कि 40 तो आराम रे आसीबो किंतु बहुत दिन हैला मु लेखा लिखि करनी तेनु गोटे समय भीतर मते लिखिबार अछि ओके सो let us go to our answer writing batch तो एबे करंटली दीटा स्ट्रीम चलची आंसर राइटिंग बैच रो गोटे रे हमें सीआरपीसी करछु आ गोटे रे हमें हिंदू लॉ करछु तेनु ए दीटा हमर रहउची so let us go to the हिंदू लॉ एथरे हमें एटा सेकंड सेशन हिंदू लॉ रो हिंदू मैरिज एक्ट रे हमें करछु तो सेक्शन 1 to 4 प्रिलिमिनरी जोटा थला सेटा हमें लास्ट सेशन में देखथिलु एबे नेक्स्ट तीनटा क्लास नेक्स्ट दीटा क्लास हमें 5 to 8 हमें देखिबा से दीटा सेट्स अछि नेचर कंडीशंस एंड सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज मॉडल आंसर्स आपण जदी रेडी अछंती ताले डायरेक्टली क्वेश्चन देखंतु आंसर करंतु नहले मॉडल आंसर्स को देखंतु तापर लिखंतु मेन जिंसटा हला ठीक लिखिबार अछि और ठीक स्ट्रक्चर रे लिखिबार अछि ओके डोंट वरी अबाउट टाइम इनिशियली समय अधिक लागुची ठीक अछि चलिबो ओके मॉडल आंसर भलिया लिखिया पे चेष्टा करंतुनी खाली स्ट्रक्चर ता ता जेरो आपण देखंतु मॉडल आंसर ता बहुत गुडे जिंस माने सेटा ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर दिछि जेटा कि परीक्षा सिचुएशन पे केबे भी लिखि हुए ना से सब एस्पेक्ट्स कवर करछ ओके व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द एग्जाम हॉल ता भीतर
जोटा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रहला जोटा आपनकर क्वेश्चन रे पचारछि सेही गुडा हमको बेसी देखियार अछि क्वेश्चन 1 को आसंतु राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 and effect of violations of such conditions on the marriage. So basic introduction देगी ingredients कौन necessities कौन अच्छी ओके आउ जदि सेगुडा मीट न करा जाए ओके ताले violation हबो ताले कौन हबो effect of violation कौन हबो डिटेल्स रे अपन तको लिखि पारि ओके एठी अपन को से बुझै की लिखुछ each पर्टिकुलर पॉइंट रे से तार अलग अलग केस लॉस दुछ परीक्षा रे में सेमति देख परिबन एटा कोन एटा आपनकर गोटे टेक्स्ट बुक प्लस गोटे आंसर राइटिंग मॉडल आंसर हिसाब रे हेल्प करूछ अपन डायरेक्टली यूट्यूब पढि की भी कांसेप्ट बुझी परिबे तापरे आपनकर फिगर ता केबे केबे कोन हुए ना ड्यू टू आवर जहाँ भी हो भूल हो जाए परीक्षा रे गोटे क्वेश्चन मत सब आसुची प्रथम क्वेश्चन रे बहुत अधिक मार्क देबे लिखिदेली सेम मार्क 25 मार्क के धरन 6टा क्वेश्चन पछ प्रथम क्वेश्चन टा अधिक लिखिदेली सेकंड थर्ड क्वेश्चन टिके टिके कमिला लास्ट क्वेश्चन पे समय न था तेणु एमितिया डायग्राम्स अपन पूरा जोटा कि कवर कर दबो पूरा अपन आंसर को सेटा भी गोटे स्किल जोटा आस्ते आस्ते अपन सिखिया पे पड़ियो क्वेश्चन 2 को आसंतु with the help of decided cases discuss the rule of exogamy under Hindu law. Okay, तो exogamy कौन तापर जो प्रोविजन सरिका रही छी ओके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से गुडा सब आपण को एथरे लिखिबार अछि ओके अमेंडमेंट्स पर कौन तार कंडीशन ओके जोटा आपण कस्टमरी हिंदू लॉ रे कौन कंडीशंस थिला कौन प्रोविजंस थिला ओके सो तापर जदि बड़ मार्क रो क्वेश्चन पड़ला 15 मार्क करिका ताले ई स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम ता आपण कर परिबे डायग्राम ता केमति करिवे गोटे फोल्डर अछि आपनकर आंसर राइटिंग बैच रे जेतर लिखाई छी डायग्राम्स बोली तो सेथरे देखिबे जानि परिबे स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम केमति करबे नॉले जेनेरिक डायग्राम भी आपण एमति करि पारि मुझे तो कहूँ जेनेरिक डायग्राम कर पारे आप मोटर भावतु कि यही एक्जाक्ट डायग्राम कर ये डायग्राम टा करू 20 मिनट लगे ठीक है तो सेटा को होनी आपको बेस करके गोटे सिंपल डायग्राम गोटे 2 मिनट रे कर नेक्स्ट कम टू प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत करंतु सब पेपर कहीं ना हमर भी ओजेएस रो पैटर्न चेंज होची से केबे के गोटे पेपर रे ही बहुत गुडे क्वेश्चन पके दउछ आगुरु पिलांकर कोन थिला एमति नो कि आगुरु पड़ेनी प्रॉब्लम क्वेश्चंस किंतु 12टा क्वेश्चन पड़े ता भीतर 6टा करिया पड़े तो पिला एमति करंती कि हमें थ्योरी पार्टटा कर दवा और पड़े भी सेमति 4टा प्रॉब्लम क्वेश्चन पड़ला और 8टा थ्योरी पड़ला मु 8टा 6टा थ्योरी करी बट एबे केते गुडे पेपर रे से सब क्वेश्चन रे गोटे कंपोनेंट रखि दउची आपनकर कोन problem based analytical questions wow skip kariବାର chance ରହୁନି okay so just a minute question 3 के आसंतु couple age 10 was married to Kavita age 7 in 1980 by their parents at Amritsar according to customary rites and ceremonies. Kavita continues to live with her parents. Kapil went to Delhi for studies and later gets a job in Delhi. He then becomes intimate with Savita, a girl working in his office, and married her in 1995. He lived happily with Savita, had a son. Later, some differences arose between them and he forced her to leave the house. Savita files a petition in court claiming maintenance under Section 13 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Kapil pleaded since his marriage to her being a bigamous marriage and void, she cannot claim maintenance as wife. Savita pleaded that Kapil's marriage to Kavita was a child marriage and void, and his second marriage to her is valid.
discuss the issues involved in the case and decide the with the help of legal provisions and judicial rulings. Can Savita claim maintenance under any other provision of law? What remedy, if any, is available to Kavita? Hello. So, एथरे हमारा FIRAC structure पढ़िबो. F for facts of the case, I for issues of the case, R for rules and regulations. Okay. Then A hela application to current case, और C hela conclusion की result की decision. Okay. और से थरे जल्दी अपन देई परिबे landmark case law तल तो आउटी फुटबॉल. Okay. ये 6-7टा case law देछि. सेमिति दरकार नहीं. हमर गोटिए दबार अछि. समय ही हबनी गोटे भी बॉलर रे दबा. ओके. तापरे सबले गोटे जिनस मन रखिबे ए जो एनालिटिकल की प्रॉब्लम क्वेश्चन रे आ डायग्राम करिया दरकार. एबे क्वेश्चन 4 को आसन. A Hindu marriage is a sacrament, not a contract. Examine whether this concept still holds good after Hindu Marriage Act 1955. So, classical kimba customary law hisab re it is a sacrament, but now is it still a sacrament or it is a civil contract or both raw features apno ko miluchi. So detail re setre apno ko likhibar achi. Okay. Have different Supreme Court ro judgments setere dabar achi, at least gote ki dita. Okay. दीटा हेले भलो, बट मु जो देखुची पिला मन जो आंसर राइटिंग मैच आंसर लिखि पढुचंदी प्राय बहुत कम पिला को दीटा लिखिया पे टाइम होची गोटे रही काहे ना यू हैव टू बाकी सब जहा जहा से पचाची सेगुरा भी लिखिबार अछि. ओके. सो एई गोटे टर्म सब को एक्सप्लेन कर दोची. इट इज ए स्टैट्यूटरी सैक्रामेंट. ओके. स्टैट्यूटरी सैक्रामेंट. राइट. तापरे रोडे बड़ थियोरेटिकल क्वेश्चन ता तेनु भलो रे तार डायग्राम किंबा तार जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम ता कर. क्वेश्चन 5 को आसंतु. इन मॉडर्न हिंदू लॉ both polygamy and polyandry have been abolished by making monogamy a statutory rule for all Hindus. Do you agree with this statement? Substantiate your answer with support of statutory provision and case law. Also refer to penalties impossible in case of infringement of this rule. Okay. So, निजर ओपिनियन अपन को दबार अछि backed by various points. Okay. लिली थॉमस केस टा एटा दबार अछि. लिली थॉमस बहुत जण कंफ्यूज हे जानती. ओके. लिली थॉमस दीटा केस दीटा लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस अछि. एटा तो गोटे अपन घर हला. ठीक अछि. पाइगेमी रिलेटेड गोटे आ गोटे हला जोटा की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. लिली थॉमस कॉन्स्टिट्यूशन रे से सेटा केस. ओके. सो सेटा अपन गोटे केस बोली भाबी अलग अलग केस. ओके. So polygamy and polyandry abolished. Tapare question 6 last question ka asandu. Pointing out conditions of a valid Hindu marriage under the Hindu Marriage Act 1955, state the effects of violation of each of those conditions on the validity of marriage. Eta टिके बुलेगी first question ta jo लिखथिले more or less content 90% same hi रही. तो एटा रे important question रा multiple times पढी. ओके. तनो आपण भी पूरा एथरा थरो होबा कथा. ठीक अछि. You should be thorough with this. OJS से भी एटा बहुत तरह पढ़ी छी. Previous year questions जो OJS जो solve questions से थरे भी आपण देखि पारे. ओके. सबले मन रखिबे जो भी सोर्स रु आपण देखुचंती तार सॉल्यूशन टा that is very important. मार्केट रे बहुत बुक्स मिलुची आ सेटा गोटे बहुत बड़ रीजन पिला एते भलो नॉलेज थे कि से माने क्रैक करि पारंतनी. से जो स्ट्रक्चर तार जो आंसर रो आजिकल माने 4-5 वर्ष हेलानी से स्ट्रक्चर ऊपर मार्क्स मिलुनी जोटा कि गोटे फ्लोइंग स्ट्रक्चर माने कोन ना गोटे एसे लिखला बडा पैराग्राफ्स से इतरे आंसर लिखा हो एते समय भी रहउनी जे करेक्ट करचंती. आपण पॉइंट्स हेडिंग सब हेडिंग से ओडा किछ दोनांती डायग्राम्स दोनांती. ओके. टेक्स्ट बॉक्सेस दोनांती हाइलाइट करिवे ना से जे आपनकर
एग्जामिनर अछंती इवैल्यूएटर अछंती जेमति कि हाइलाइट है कि आपनकर एई पार्टटा इंपोर्टेंट पार्ट हां ये लिखिछन एटा तेनो आपन जदि एटा गप भलिया लिखिजिबे ओके ताहले सेतर मार्क्स आसीबन सेम थिंग फॉर ओएसजेएस आल्सो एडीजे परीक्षा पे से तो बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट आंसर लिखे पड़े 2 मार्क क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन ओके एमती 25 मार्क क्वेश्चन पड़े ओके सो टू द पॉइंट आपन को लिखिया पे पड़िबे सेटा राइट तेनु सेही हैबिटटा किंबा सेही पर्टिकुलर स्किलटा आपन को कल्टीवेट करिया पे पड़िबो कि अल्प रे जहा दरकार सेटा केमती लिखा ओके सो स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज वेरी इंपोर्टेंट सेटा मने रखिबे ओके सो एटा हला आरो दीटा सेट अछि ओके आ गोटे सेट हमें ताको देखिबा काली ओके जेतरा इंपोर्टेंट अछि जदि दरकार पड़िबो हमें तीनटा सेट भी कर देबा काहे ना ई चारिटा सेक्शन से ही बहुत गुडे इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स अछि किछटा कांसेप्ट हमें आज देखिलु आउ किछटा कांसेप्ट्स हमें नेक्स्ट सेशन रे देखिबा एई सेम आपनकर जो हमर स्ट्रक्चर अछि किंबा सेम सेक्शंस अछि ओके 5 to 8 आउ दीटा सेशन भी रहइबो आउ पर काना एथरे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोना बहुत थरा रिपीट हो सो बेस्ट विशेस जो मेंस कथा कहिथिबी मेंस बैच कथा तो आंसर राइटिंग बैच और मेंस बैच दीटार लिंक्स दिया हिच डिस्क्रिप्शन रे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपण सेटा जॉइन कर पारे नेक्स्ट सेशन रे हमें पुनी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखिबे नमस्कार।